कैजुअल मेकअप विदाउट फाउंडेशन। मेकअप स्टार्ट करने के पहले डू मॉइस्चराइज योर स्किन। मैं यूज कर रही हूँ स्किन फॉर्मूला 9 का इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। ऑलवेज मेक श्योर कि आपका स्किन जो है वो नरिश्ड है। SPF भी लगाना है, सनस्क्रीन जो आपको धूप से बचाता है। सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करने के बाद यू हैव टू यूज अ प्राइमर। प्राइमर जो है आपको बहुत अच्छे से यूज करना है ऑल ओवर योर फेस। एंड आफ्टर यू अप्लाई प्राइमर इट्स टाइम फॉर कॉम्पैक्ट। बट कॉम्पैक्ट को अप्लाई करने से पहले वी विल स्प्रे अ मिस्ट एंड देन हम कॉम्पैक्ट को अप्लाई करेंगे। कॉम्पैक्ट को आप जब भी अप्लाई करें, अप्लाई इट अंडर योर आईज, ओवर योर आईज, ऑल ओवर योर फेस। अच्छे से कवर होना चाहिए आपका स्किन। एंड डू इट एज मैनी टाइम्स एज यू वांट, यानी कि आपका स्किन जो है वो अच्छे से कवर हो जाए विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट। बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग फाउंडेशन हियर, सो इट इज़ अ मस्ट कि आप कॉम्पैक्ट जो है वो अच्छे से अप्लाई करें। And after you have applied the compact, again mist your face and then we will use loose powder. लूज पाउडर जो है आपके स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन अप भी कर देगा। सो अंडर आई एरिया में अप्लाई करें, चिन के आसपास, माउथ के आसपास अप्लाई। मूविंग ऑन टू द फिनिशिंग टचेस। एंड फिनिशिंग टचेस में सबसे पहले वी आर गोइंग टू यूज अ मस्कारा। And now we are going to use lipstick. And after this we will shape our eyebrows. Very important step, never forget this step. And yes, eyeliner which gives dimension to your eyes, shape to your eyes. एंड लास्टली वी विल अप्लाई अ ब्लश। ब्लश जो है आपके ओवरऑल पूरे फेस को बहुत अच्छे से हेल्दी ग्लो दे देता है। एज यू कैन सी कितना डिफरेंस आ गया है। एंड अब हाइलाइटर भी अप्लाई करेंगे एंड सेट अप विथ द मिस्ट। नाउ सी बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स। Amazing! Do subscribe if you like this video. Thank you.